Hello, Mataji, and you're watching Hornbilltv's Prime Time. Now headlines. US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard expressed confidence that a partnership and friendship between the US and India and Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump will continue to grow and strengthen. Adani Enterprises Limited Group Chairman Gautam Adani and MD Rajesh Adani have been discharged from a case of alleged violations of market regulations involving Rs 388 crore. NASA's Boeing Starliner astronauts Sunita Suni Williams and Barry Butch Wilmer, along with 2 others, have undocked from International Space Station and are scheduled to splash down on Earth Tuesday evening. Congress leader and former party president Sonia Gandhi on Tuesday spoke in the Rajya Sabha and raised the issue of the allocation for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MG and REGA) and said that the Bharatiya Janata Party-led union government has systematically undermined the scheme. Adani Enterprises Limited Group Chairman Gautam Adani and MD Rajesh Adani have been discharged from a case of alleged violations of market regulations involving Rs 388 crore. The Bombay High Court single bench of Justice R.N. Ladhau Monday said that no case of cheating or criminal conspiracy was made out. The court said that merely by asserting that the accused has made a wrong gain without demonstrating the corresponding wrongful loss of deception suffered by a specific victim does not suffice to attract the offence of cheating. The SEIO sought the bench to stay its order for a period of 2 weeks so that it could file an appeal in the Supreme Court. Justice Ladha, however, refused to do so. In 2012, a case against the duo was initiated by the Serious Fraud Investigation Office. In 2019, the company and the 2 industrialists filed a petition in the High Court seeking to quash a Sessions Court order of the same year, refusing to discharge them from the case. After Meitei youth went missing, rally held in Imphal. Police scuffled with rallying protesters at Raj Bhavan area. However, the rally procession forcefully went straight up to Nupilal complex. Few representatives along with the mother of the missing youth were allowed to go inside Chief Secretary office at Babupara for expressing their demand. Popular women activist Sujata Devi, who accompanied Mukesh's mother, says 24 hours deadline is set to find out the whereabouts of the missing man. After that, intense agitation will be launched. Sujata Devi suspected hostage situation that Manipur encountered earlier, saying earlier when people were held hostages, no perpetrators was caught and punished. That is why such things are repeating. She demanded stringent actions against the perpetrators. अभी 16 की इवनिंग से एक हमारा बच्चा गुम हो गया था, उसका नाम है मुकेश। तो अभी तक वो पता नहीं है कहाँ है, कैसे है, क्या हाल में है। अभी तक ये प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, फिर भी गवर्नर अभी तक रिप्लाई नहीं दे रहा है। और कब से हम लोग मांग कर रहा था वो बच्चा ढूंढ कर निकाल कर दे दीजिए। अभी तो
सेंटर का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नर का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग तो पहले सिट इन प्रोटेस्ट में रह रहा था कल से, तो अभी तक इन्फॉर्म नहीं आने से हम लोग ने सोचा था एक बार चीफ सेक्रेटरी को मिल लेते हैं, क्योंकि गवर्नर को कल रात हम लोग गया था, वो बोला था आउटसाइड में है। तो इसीलिए हमने चीफ सेक्रेटरी को मिलने के लिए अभी हम साथ में जाना चाहते हैं। क्योंकि आप बता दीजिए मीडिया लोग, क्यों कह दिया अमित शाह जी ने 1 तारीख में, क्यों कह दिया फ्री मूवमेंट हो जाएगा 8 तारीख से? तो अभी होली का टाइम है, बच्चा है, तो उसका क्या गलती है बताओ? ऐसा नहीं है वो बांग्लादेश में गया है, ऐसा नहीं है वो पाकिस्तान में गया है, चाइना में गया है, वो नहीं ना, मणिपुर है ना, ये मणिपुर इंडिया का एक पार्ट नहीं है क्या? इसी में ऐसा कैसे रहने दिया है? पहले सरकार था, उसने नहीं हो पा रहा, तो वो लोग बोल रहा था प्रेसिडेंट रूल रख देगा। तो प्रेसिडेंट रूल रखने के बाद 8 तारीख से फ्री मूवमेंट हो जाएगा बताने के बाद क्यों ऐसा गुम होने दिया? यही मांग करता हूँ सेंट्रल सरकार को और गवर्नर को और इंडिया का जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आप लोग अभी चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, हाँ। तो क्या क्या बोलेंगे उससे, क्या डिमांड है आपका? हम लोग का डिमांड क्या क्या है ये बताइए। हम लोग का डिमांड से कल से बोल रहा था, ये मेमोरेंडम भी कल रात को दिया था, उसी टाइम में बोल रहा था 24 आवर के अंदर बंदा को ढूंढ कर निकाल कर दे दीजिए, क्योंकि वो गुम हो गया था 16 को। तो उसके बाद ये जिसका माँ है वो लोग जा करके FIR भी कर चुका है, तो फिर भी अभी तक नहीं दे रहा है। तो अभी पूरा ये सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेटल नहीं कर पा रहा है, हमारा प्रजा का रक्षा नहीं करेगा तो गवर्नर बैठ कर क्या करना है? अभी के टाइम में वो वहाँ रहना जरूरी है क्या? वो पता तो चल हुआ होगा, कल रात वो मेमोरेंडम देने से पता तो लगा होगा, कम से कम आना चाहिए था ना। सुरक्षा वो करने वाला है, वो उधर क्यों बैठा है? चलो वो बैठ गया, अच्छी बात है, फिर भी इधर का फोर्स लोग को इतना सेंट्रल फोर्स है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टेट फोर्स का तो छोड़ दो, सेंट्रल फोर्स इतना होने के बाद एक बच्चा 20 इयर्स का एक बच्चा गुम होने से अभी तक ढूंढ करके दे नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है? हम लोग को क्या समझते रखा है वो लोग? हम प्रजा लोग को क्या समझते रखा है? ऐसा हमने कभी भी वो लोग का जो भी आता है कभी भी इस तरह का गुम होने दिया नहीं। 23 मंथ्स हो गया, एक बार भी एक इंसान गुम होकर वो लोग को नहीं दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपने कहा कि ऐसा पहले भी हो चुका है, हाँ, और बार बार हो भी सकता है, क्योंकि मतलब हाँ, एक ही साथ है नहीं हो रहा है ना, वहाँ तक कोई भी जा सकता है। हाँ। तो इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन लाने के लिए क्या करने चाहिए वो बताइए। परमानेंट सोल्यूशन लाने के लिए जो गलत कर रहा है वो लोग को पनिशमेंट देना चाहिए। अभी तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, इक्विवेलेंट काम करना जरूरी है ना। ऐसा नहीं है जो विलेज को ही टॉर्चर करते रहेगा, विलेज को ही बोलते रहेगा आप सरेंडर करो। सब भी किया है, आप लोग मीडिया में भी देखा होगा, हमारा विलेज वॉलंटियर सब ने भी सरेंडर कर चुका है पर वो लोग तो अभी तक ऐसा करते रहे। इसका मतलब है वो लोग सेंटर और जो भी हम लोग से टॉर्चर कर रहा है उस साथ दे रहा है क्या? क्योंकि हमसे कर सकता है तो उसी लोग से क्यों नहीं कर सकता है? वहां जाकर धुन क्यों नहीं वो लोग नहीं कर सकता है? बता दीजिए आप लोग भी। इसलिए ये नहीं चलेगा, करना है तो इक्विवेलेंट काम करना होगा, नहीं विलेज को ही टॉर्चर करेगा, मैते को ही टॉर्चर कर, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बंदा भी सही तरह से वो ढूंढकर आज देना पड़ेगा, मैं वही मांग करूंगे। हम लोग नहीं देगा तो ये गवर्नर, ये प्रेसिडेंट रूल कोई भी हमारा से मतलब नहीं है। क्या जरूरत है प्रेसिडेंट रूल रखने की? क्या जरूरत है? ये Mother of missing youth Omi Luwangtem says around 2 p.m. on 16th of March, Mukesh asked for some money and went out of home without having his food, saying he will have after returning. However, the son did not return that night, so the mother started worrying. The FIR was filed at Imphal police station at around 11 a.m. on 17th of March. The police control room statement says on 17/3/2025 at about 11 a.m. a missing person report on 16/3/2025 of one Luwangtem Mukesh, 20 of Kesampat Lemaitam, Lekai, Imphal West was reported to OC Imphal police station. On receipt of the report, an inquiry has been initiated. All-out efforts are ongoing to trace the missing person by the police department and security forces by launching search operations in all suspected areas. We'll take a short break. Keep watching.
Itu video de ami khan janibo kinaka ami khan laga diet pra tel do komti kuribo moina de tel kina time de komti aro kiman tel lage iman hi kinibi itu bra apuni tel kha to monitor kuribole paribo subji paka time de tel do bottle bra nohi kina hodai ekta chamos pra nap kuri kina dalibi gao ge bar rakhibo khorone kisim tel cholai thakibi tel ke bar gorom nakribi aro ekbar tel ke cholai dishe kule itu tel do aro pakabo khorone na cholabi butter aro ghee nishna khan komti aro lagya amount hi cholabi itu video de apuni khan janishe ke kinaga nijor laga diet pra tel laga istimal komti kuribo ahibi aro dubara janibo ke aji ki sikishe moina de tel kina time de komti aro kiman tel lage iman hi kinibi itu bra apuni tel khado monitor kuribole paribo subji paka time de tel do bottle bra nohikina hodai ekta chamos pra nap kurikina dalibi gao ke bar rakhibo karone kisim tel cholai thakibi tel ke bar gorom nakribi aro ekbar tel ke cholai dishikule idu tel do aro pakobo khorone na cholabi butter aro ghee nishna khan to komti aro lagya amount hi cholabi Welcome back. Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma, upon reaching Silchar on Tuesday morning, first took part in the opening of a new temple of Ramakrishna Mission Sevashram in its 100 glorious years of establishment in Silchar. He announced a package of ₹4 crore for Ramakrishna Mission service to medical care of the needy and also an additional ₹5 crore for the new temple. In Tarun Ram Bhukan Higher Secondary School, he took part in the Golden Jubilee celebrations and said the number of students are depleting, for which the English medium needs to be introduced along with the vernacular medium of academic subjects. In SM Devi Civil Hospital, he laid the foundation of a ₹24 crore sanctioned 50-bedded care block. He also virtually laid the foundation for a new circuit house adjacent to the new DC office worth ₹26 crore. He also, in his address out here, spoke of giving a flyover in Silchar to decrease traffic congestion. Later, talking to the media, he said all-round development would take a giant step in this region if more industries come, and for that land without any dispute is needed. When quizzed by journalists about the benefits of Advantage Assam. Ashramor নতুন মন্দিৰ আৰু শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত যোগদান দিবলৈ মই শিলচৰলৈ আহিছিলোঁ। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহতো মই যোগদান কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰায় 22-23 কোটি টকা ব্যয়েৰে শিলচৰত 50খন বিছনাযুক্ত ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ইউনিট এটা স্থাপন হ'ব, তাৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ। 26 কোটি টকাৰে ইণ্টিগ্ৰেটেড DC অফিচৰ কাষতে এটা চাৰ্কিট হাউচ নিৰ্মাণ হ'ব, তাৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ। আৰু শিলচৰলৈ যথেষ্টখিনি ডেভেলপমেণ্ট কাম হৈ আছে। এই কামবিলাক যাতে খুব ভাল কৰি হয় তাৰ প্ৰতিও মই চকু ৰাখিম, দৃষ্টি ৰাখিম। আৰু মই ভাবোঁ যে এই অনুষ্ঠানবিলাকে বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজৰ মাজত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব। শুনিলে না শুনিলে না মইতো ক'লোৱে কথা। এডভান্টেজ আসামৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত আমাৰ বৰাক অঞ্চলত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আন্তঃগাঁথনি কি হ'ব? গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে মাটিৰ ওপৰত, আমি কিমান মাটি যোগাৰ কৰিব পাৰিম। গতিকে এতিয়া আমি ডিচিসকলক কৈছোঁ যে কোনে কেনেকৈ ক'ত মাটি দেখুৱাব পাৰে। যদি বৰাক উপত্যকাত আমি মাটি দেখুৱাব পাৰোঁ, ইয়াতো উদ্যোগ আহিব। গতিকে গোটেইটো ডিপেণ্ড কৰে জিলাত কিমান মাটি আছে আৰু কিমান মাটি বিতৰ্ক নোহোৱাকৈ দিব পাৰে। আমি কোনো আৰ্গুমেণ্ট বা ডিবেটত গৈ মাটি ল'ব নোখোজোঁ। গতিকে যিমানখিনি মাটি আমি আগবঢ়াই দিব পাৰিম সিমানে অসমত উদ্যোগ আহিব।
People in some villages of Meghalaya are struggling with lack of essential commodities. Development has not yet reached many villages like Balari, Modam, Rajkumai, Umsafar, situated in the hills of Tent Chirang Assembly constituency in Riboi district of Meghalaya. These villages are suffering from severe neglect of development. Located near the historic Jantubi and South Kamrup district of Assam, this village is home to about 7,000 to 8,000 Khasi ethnic people. These villages have seen little progress in terms of infrastructure and basic amenities. The villages is located about 3 kilometers from the Maduki Zonal Forest Office with access via the Mirza Jantubi Road. While serving several Khasi settlements extend beyond the inner state border, residents face significant hardships due to the lack of essential services. Despite the Indian government's flagship initiative, Sabka Saath Sabka Vikas, the scheme's promises seem distant for these villages. Villagers have repeatedly raised concerns about the absence of basic infrastructure. According to locals, the villages is deprived of roads, drinking water, electricity and medical facilities. With schools and hospitals far away, residents often have to rely on Assam for even the most basic services. In addition to the water scarcity, the villagers face severe challenges during the monsoon season due to poor roads. The roads become unusable during the rainy season, making it extremely difficult to travel. Furthermore, the area experiences up to 6 to 8 months of electricity shortages, exacerbating daily hardships. The lack of medical facilities has also led to preventable deaths as villagers struggle to access timely medical care. মোটামুটি আপনার 19 বছর পার হৈ গল 19 বছর পার হৈ গল কথা হল কি মানে ভোটৰ সময়ত এমএলএ বিলাক আহে কিন্তু সময়ত মানে যেতিয়া এমএলএ টো মানে ইলেকশনটা শেষ হৈ গল তাৰ পাছত এমএলএ দেখি নাপাওঁ আৰু যেতিয়া ভোট আহিব যেতিয়া ইলেকশন আহিব ইলেকশন আহিলেহে এমএলএ বিলাক মিনিষ্টাৰ বিলাক আহে নহলে বেলেগ সময়ত আমি 5 বছৰ দেখি নাপাওঁ এটা বৰ্তমান যেটো ৰোলিং এমএলএ আছে তেখেতোটো ইলেকশন সময়ত আহিলে এবাৰটো ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ইলেকশনটো গল যেতিয়া আহিছিল তাৰপিছত নেক্সট দেখা নাপায় আৰু এতিয়া যদি আপোনালোকৰ জৰিয়তে কিবা এটা এই ৰাইজৰ ভাল এটা সুবিধা আহে তেতিয়া আৰু বৰ ভাল কথা আছিল আৰু সমস্যাটো আপোনাৰ মেইনলি হল ৰাস্তা সমস্যা আছে আপোনাৰ ৰাস্তাৰ লগতে আপোনাৰ ইয়াতে পানীৰ অসুবিধা আছে লগতে লাইনৰো অসুবিধা আছে আপোনাৰ লাইনটোতো বাৰিষা 6 মাহ 7 মাহ লাইনে নাপাওঁ আপোনাৰ মইতো লাইনে লোৱা নাই তথাপি আপোনাৰ ৰাইজে পালি ভাল পালোহেঁতেন মইতো চলাৰতে আছো কিন্তু মেইনলি আৰু পানীৰ সমস্যাটো বহুত আছে আৰু মেডিকেলটো নাই আপোনাৰ মানুহ যদি বেমাৰ সেমাৰ হ'ব লগা হয় নহয় মানুহ আধাতে ৰাস্তাতে মৰি যায় আপোনাৰ মানুহটো আছে বহু মানুহ আছে 6000 7000 মানুহ আছে আৰু আছে কিন্তু কথা হৈছে কি ৰাস্তা সবে বেয়া আৰু পানীৰ সমস্যাটো পানীটো এইটো জল জীৱন আঁচনি এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হৈছিল কিন্তু কাম কৰে কিন্তু পানীটো নাহে তেনেকুৱা অৱস্থা আৰু আমাৰ ইয়াত পানী সমস্যা বিৰাট পানী নাই এতিয়া আমাৰ এটা চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা কৰে পানী লাগে আমাক লাগিব ৰাস্তাটো বিৰাট সমস্যা বাৰিষা হলে গাড়ী যাব নোৱাৰিম মানুহ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিম মানুহ বেমাৰ হলে হেৰি মিৰ্জাত যাব লাগিব পাঠাৰকুমা যাব লাগিব মেডিকেল নাই তাতে মানুহ মৰি যায় In a major blow to narcotics smuggling in the region, Assam Rifles apprehended an alleged drug smuggler at Kultang village in Chandel district of Manipur along Indo-Myanmar border on Sunday. The official said, acting on specific inputs regarding the movement of contraband items on Kangparol, Chaupi Churachandpur Road, a team from Assam Rifles launched a dynamic mobile vehicle checkpost (MVCP) at village Kulchang and intercepted a Maruti van carrying one individual. Upon searching the vehicle, the team recovered 137 soap cases containing brown sugar worth approximately rupees 3.29 crore in the international market and 2 mobile phones. The Inspector General of Assam Rifles Headquarters South has confirmed the apprehending of the alleged smuggler and seizure of the contraband items. A defense wing statement stated that the operation demonstrates the commitment of Assam Rifles to disrupting narcotics smuggling in Manipur and ensuring a safer environment for the local population.
NASA's Boeing Starliner astronaut Sunita Suni Williams and Barry Budge Wilmer, along with 2 others, have undocked from the International Space Station ISS and are scheduled to splash down on Earth Tuesday evening. NASA will provide live coverage of the SpaceX Crew 9 Dragon Freedom capsule carrying the 4 astronauts back to Earth from the International Space Station. Williams and Wilmore are accompanying SpaceX Crew 9 astronaut Nick Hug and Russian astronaut Alexander Gorbanov. William and Wilmore had launched to the ISS on June 5 on a Boeing Starliner spacecraft, then stayed aboard the ISS after it developed technical issues. In September 2024, NASA sent the Starliner craft back to Earth uncrewed to free up the docking port for other spacecraft. Now, after 9 months, William and Wilmore are set to return to Earth on the capsule of the Elon Musk-owned SpaceX. NASA posted the development on X. They are on their way. Sunita Williams and Butch Wilmore, alongside Nick Hug and Roscosmos cosmonaut Alexandra Gorbanov, began their 17-hour journey back to Earth aboard a SpaceX Crew Dragon spacecraft. As NASA went live, Nick Hug, Suni Williams, Butch Wilmore and cosmonaut Alexander Gorbanov were seen packing up and closing the hatches as Crew 9 prepared to depart from the space station. NASA and SpaceX met on Sunday to assess weather and splashdown conditions of Florida's coast for the return of the agency's Crew 9 mission from the International Space Station. Mission managers are targeting an earlier Crew 9 return opportunity based on favorable conditions forecasted for the evening of Tuesday, March 18, it added. According to a NASA statement, the updated return target continues to allow the space station crew members time to complete handover duties while providing operational flexibility before less favorable weather conditions are expected later in the week. Mission managers will continue monitoring weather conditions in the area as Dragon's undocking relies on several factors, including spacecraft readiness, recovery team readiness, weather, sea states, and other factors. Wilmore and Williams have been stranded on the ISS for 9 months after reaching there in June last year. They were supposed to stay there for about a week. The astronauts were transported from Earth to the ISS aboard Boeing Starliner spacecraft. However, the spacecraft came back to Earth unmanned in September. This came after NASA and Boeing identified helium leaks and experienced issues with the spacecraft reaction control thrusters on June 6 as Starliner approached the space station. That's all we have for now. Keep watching Hornbilltv.